Lal Singh Chaddha basically is a remake of Forrest Gump. That's something that even Amir Khan has accepted कि ये तो basically Forrest Gump का retread है. And the shame is कि जो at least what I'm hearing from social media is कि Forrest Gump में there used to be a really great character called Lieutenant Dan. Lieutenant Dan was a very tragic character that has a very interesting arc in the entire movie, but apparently that Lieutenant Dan has been converted into a Pakistani soldier, Pakistani captain or Pakistani soldier, जिसके साथ obviously Amir Khan's Lal Singh Chaddha becomes very fast friends, and peace and brotherhood और आपस में अमन की आशा का संदेश देते हैं. ये संदेश साला 20 साल से इतना स्टेल हो रखा है फिर भी, लेकिन ये जो बुजुर्ग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ये देना नहीं भूलते ये ज्ञान हम लोगों को. एंड अपेरेंटली इन अ लाइन ड्यूरिंग द फिल्म ये पाकिस्तानी बोलता है कि यार मैं तो 5 बार नमाज पढ़ता हूँ, लाल तू क्यों कुछ नहीं पढ़ता? तो लाल सिंह चड्ढा बोलता है नहीं नहीं यार, ये सब तो पूजा पाठ में कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से तो सिर्फ दंगे होते हैं, इसलिए मैं पूजा पाठ वगैरह नहीं करता क्योंकि पूजा पाठ करने से सिर्फ दंगे होते हैं. तो मैंने कहा ठीक है. बट ऐसी फिल्म को पॉइंट ये है कि उसने तो फिर अगर एकदम दूसरे तरीके से देखे तो लाल सिंह चड्ढा तो उसकी पूजा पाठ को भी तो क्रिटिसाइज कर रहा है ना, मुसलमान की. Apparently you would like to think so, but Lal Singh Chaddha box office collection day 1, Amir Khan starred makes a dull opening, 15 to 20% occupancy for morning shows, trade in shock. अब ये भी हो सकता है. I think one thing you need to caveat when you show this, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, but one thing you have to caveat when you show this is कि ये इंडिपेंडेंस डे के आसपास का टाइम है. It's possible कि after Independence Day the box office might pick up. I don't know. I'm not a trade expert, but ये कभी-कभी होता है कुछ फिल्मों में. I would be very skeptical of any claims that because social media trended boycott Lal Singh Chaddha, the movie flopped. It could just be the movie sucks. It could just be that the people just don't have an interest in this film. Because let me tell you, दंगल के टाइम पे भूल गए हो लोग, 2 महीने पहले आमिर ने वो स्टेटमेंट दी थी, इंटॉलरेंस वाली या कौन सी वाली आमिर ने दी थी, और लोगों ने तभी बॉयकॉट, दंगल भी बहुत हुआ था, याद है ना, तभी भी हुआ था. दंगल वाज अ सुपर डुपर हिट. तो भैया अगर पिक्चर अच्छी होगी तो चलेगी, तुम्हारे सोशल मीडिया के रंडी रोने से कुछ नहीं होना. और अगर सुपर फ्लॉप होनी है तो सुपर फ्लॉप होनी है, फ्लॉप होएगी. बेसिकली प्रोडक्ट अच्छा होगा तो चलता है, प्रोडक्ट गंदा होगा तो नहीं चलता. तो अगर लाल सिंह चड्ढा अगर अच्छी मूवी होगी तो चलेगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी. अक्षय कुमार को भी देख लो ना, अक्षय कुमार भी बेसिकली टू फेस है, बैटमैन के टू फेस है. आधे टाइम ये नेशनलिस्ट है, आधे टाइम ये कुछ और ही करते रहते हैं. तो उनकी भी फिल्म अगर तुम देख लो, अगर अच्छी फिल्म है तो चल जाती है, अच्छी फिल्म नहीं होती है तो नहीं चलती. पृथ्वीराज नेशनलिस्ट फिल्म थी कि नहीं थी? हाँ, पिट गई ना. पृथ्वीराज ऑनेस्टली तो मेरे को उतनी बुरी भी नहीं लगी थी. आई डोंट नो व्हाई पीपल, आई कैन अंडरस्टैंड पीपल मे हैव फाउंड इट अ लिटिल बिट बोरिंग एट पॉइंट्स, बट आई डिडंट इवन थिंक इट वाज सच अ बैड फिल्म. पिक्चर पिट गई ना. हाँ एग्जैक्टली. ये जो लॉजिक है ना, उसको तो बीजेपी ने भी प्रमोट किया था पिक्चर को, तब भी पिट गई भाई, पिट गई. मान लो ये जो पिक्चरों का, मान लो ये जो पिक्चर का चलना और ये चीजों में कोई कनेक्शन होता नहीं है. इट हैज वन हैज नथिंग टू डू विद द अदर. टट्टे इडली वर्जन ऑफ फॉरेस्ट. तो वही है. I honestly don't know कि unless you know it reaches like mainstream media, जो normal अखबार है उसमें अगर जब तक नहीं आ जाती ये बात, तब तक I doubt कि Twitter पे ट्रेंड कराने से, which has a small, pretty small user base compared to the population of India, Twitter पे ट्रेंड कराने से you can actually make people not go and watch a film. I don't think ट्विटर से इलेक्शन रिजल्ट डिसाइड नहीं हो सकते. सेम लोग जो बोलते हैं ट्विटर से फिल्म डिसाइड होती है, वही सेम लोग बोलते हैं ट्विटर से इलेक्शन डिसाइड नहीं होता. हाँ, वो बात भी है. इट नथिंग मेक्स सेंस एनीमोर. ये देखो क्या होता है कि जैसे लेफ्ट विंग सर्कल जर्क्स होते हैं ना, वैसे राइट विंग सर्कल जर्क्स भी होते हैं. ये एक राइट विंग सर्कल जर्क ये भी जिफ बनने वाला है. गुड लक. इसका भी लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके जिफ बनाने वाले हैं. बकवास. देखो, मेरे को तो कोई अक्यूज नहीं कर सकता कि मैं बॉलीवुड एनेबलर या डिसेबलर हूं. मैं तो देखता ही नहीं हूं. मैं तो आज से नहीं, मैं तो 15 साल से देखना ये बकवास बंद कर चुका हूं. मेरे तो दिमाग में बैठती नहीं है हिंदी सिनेमा, मैं नहीं देखता. केजरीवाल ने आमिर को यूट्यूब पे डालने को कहा है, फ्री हो जाएगी. यूट्यूब पे डाल दे भाई.
So yeah, YouTube पे डाल दे. I honestly don't understand all this. I don't care if it does well or does poorly. That's Yeah, my whole thing is I don't give a shit. But let me tell you, people who accuse right wing of canceling, they are wrong, because yeah. the people in the left are the bastards of the highest order. They have been canceling the shit out of everyone No, since they have time been immemorial. canceling, and the thing is, nobody is saying, as far as I have seen, nobody has said कि Amir Khan should not be allowed to make films anymore. Mhm. People have said, मैं नहीं देखने जाऊंगा. People have said, let's make a decision to not go and watch this film. Nobody has said कि remove. Maybe some people have said that, but the majority of people are not saying remove the film from theaters. They are not saying ban Amir Khan. They're not saying ban Lal Singh Chaddha. They're not saying any of those things. They're saying मेरे को नहीं देखनी, मेरे को ये आदमी नहीं पसंद, मेरे को इस आदमी की फिल्में नहीं पसंद, मैं नहीं जाऊंगा देखने. That is the overwhelming sentiment from the quote unquote right on social media. There's nothing wrong with that in my वो opinion. भी नहीं देखनी बोलने मत के लिए देखो. होता है, सब जाके देखते हैं. देखो, और एक मैं बात बोलूं, नहीं, I'm मेरे just को saying तो there's nothing wrong with that. मेरे को तो That's not cancel culture. आप नहीं देखना चाहते किसी फिल्म को, that's not canceling the film by the way. जैसे अगर मैंने वीडियो रिलीज किया और लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो, that doesn't mean I'm being, that just means people did not want to watch the video. Yeah, and not only that, at the end of the day, if Amir Khan has a right to feel that India is intolerant and say that, people have a right to say we don't want to watch your movie. So it's you live by, it's the sword you live and die on. It's a double-edged sword, whatever you want to do. But Yeah. what I have a problem with is correlation causation issues bahut hain ki because people made noise on social media, the movie tanked or something. That is the part which I am saying I have nothing, I have not seen the evidence. Yeah. And I don't want to do anything with it, so I'm not going to comment on it. But as far as all these other peripheral things, you know of this is concerned, I could care less. People, look, like I said, people can say what they want to say, people can do what they want to do. Yeah. As long as they don't stop Amir from making movies, I don't give a shit. Yeah, I don't really care. If the Indian state stops Amir Khan from making movies is when I have a problem. Yeah. The Indian state has nothing to do. You as an individual And don't want to nobody watch. has any problem with Amir Khan yaar. Are people are saying कि Amir Khan को ये करो वो करो. Amir Khan said all these things that he said about Modi. He said Modi ने genocide किया है, Modi ने ये किया, इतने लोगों को मारा. Basically implicated Modi in the 2002 riots on an interview with Shekhar Gupta. Many years after that, Amir Khan, मोदी जी ने ही बुलाया था ना आमिर खान को मिलने के लिए. ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे उन्हीं के साथ. अरे यार, आमिर और शाहरुख दोनों की सेल्फी है मोदी के साथ, तो यार दोनों मोदी की को सेल्फी है प्रॉब्लम मोदी नहीं के है. साथ. तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? Yeah. यार फिर वही तो मतलब पॉइंटलेस है ये चीजें. देखो, मैंने बोला ना, ये सब चीजें पॉइंटलेस होती हैं. आपको पिक्चर देखनी है आप देखो, आपको नहीं देखनी है आप मत देखो. आपको अनाउंस करना है, दुनिया को बोलना है कि नहीं देखो, प्लीज करो. मैं तो वैसे ही नहीं देखने वाला, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. Yeah, exactly. तो let's see कि इसका बॉक्स ऑफिस कैसा होता है. I think it's too early to say because अभी तो एक ही दिन हुआ है. Let's see कि 2-3 दिन में by the time Independence Day rolls around, तब तक क्या होता है, कितनी इसकी परफॉर्मेंस होती है. तो I think that's a better time to make a objective call on कि whether the movie is doing well or the movie is not doing well. In the meantime, बिहार पे भी आते हैं जरा. मैं लाइन बोलूंगा. राम बोलो. ने बहुत अच्छा ट्वीट लिखा था कि maybe if a movie does bad, it is just about how bad overall Hindi cinema is becoming. Yes. Nothing to do with cancel culture. That's true. आप देखो, I want to give a shout out to this film because A, I love this film. B, everybody in the West seems to love this film as well. It's an Indian film, RRR, ये जो राजामौली की film है. That film, for people that are living in India, for people that do not live outside of India, I don't think people realize this. But that film is an absolute phenomenon in the West. I don't think people realize this, but there's a huge YouTube channel, बहुत समय से बहुत पुराना YouTube channel है, and it makes this thing called honest trailers, and it makes like parodies of like films in a trailer form basically, and it's a very popular series on YouTube. Honest Trailers only covers
Hollywood films. It's the first time they've ever covered an Indian film in 10 years of doing these reviews, and they covered RRR. And RRR is being shared by Hollywood actors, Hollywood writers, like big, big wigs in Hollywood. Everybody's sharing it. People are watching it. And it shows you, okay, people do not act this way about Hindi films, by which I mean the Mumbai film industry. They are not reacting this way about any recently released Hindi films. They react this way about RRR because in at least the popular imagination for the time being, it is possible that Hindi film industry, course corrects and goes back to, making popular films. But at least for the time being, in the popular imagination, these so-called regional films are the new mainstream. इनको समझ में आ गया है कि public को क्या चाहिए, and they have tailored their films to providing exactly what the public wants. Whereas the Hindi film industry is very, I feel like it's very hyper focused on making sure कि हमको critics वाली, critics like us. All the Times of India के critics, the Hindu के critics, NDTV के critics, film companion हमको like करे. That's the most important thing for us. Indian public like करे कि नहीं करे, we don't care about that.